अपने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अरे क्या हो गया, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिस इज द टाइम you have, how much time you have, देख लो, सॉल्व करो. The question is P and Q are 2 points on the ground on either side of the pole. The angle of elevation of the top of the pole as observed from P and Q is 60 degree and 30 degree, and the distance between these points is 84 root 3. You have to tell me the height of the pole. The time allotted for this question is just 30 seconds. Try it and solve it and tell me the answer. This is the level of speed that I want, and it is most scoring topic of your syllabus. बहुत आसान टॉपिक होता है, इस टॉपिक में टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं भाई. या तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लेंगे या एंगल ऑफ ये क्या डिक्टेशन पूछ लेंगे, यही सारी चीजें पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे. पहले टावर को खड़ा कर देंगे, टावर की हाइट पूछ लेंगे, या फिर उसको टावर को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे और उसके बाद सड़क पे 2 पॉइंट्स की हाइट पूछ लेंगे. दैट इज द ओनली थिंग दैट दे कैन डू. एंड इन मोस्ट ऑफ द cases the triangle that you get is 30, 60, 90. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रायंगल आपको मिलता है वो 30, 60, 90 तक मिलता है. मतलब 30, 60, 90 ट्रायंगल मतलब या तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया होगा या तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया होगा. कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, जैसा कि एक क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था जहां पे हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था और शायद उस क्वेश्चन में 2 केसेस आए थे, वहां पे हम लोगों को 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल दिया गया था. So now let me explain you how we will solve this question. The question is saying P और Q 2 पॉइंट है जो कि एक टावर के पोल के दोनों तरफ सिचुएटेड है. That means what, my dear friend, here this is P, this is my P point, and this is my Q point. Okay, right? This distance is 84 root 3. बहुत अच्छी बात है सर. ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री. वेरी गुड सर. और ये वाला जो एंगल है ये मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री. बहुत अच्छी बात है सर. ये वाली हाइट मेरे से पूछी गई है. फाइन. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल नेम दिस पॉइंट एज S. अब आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने इसको x माना होगा, इसको 84 रूट 3 माइनस x माना होगा. तो उसके बाद पहले आप लोगों ने x को सॉल्व किया होगा, फिर आप लोगों ने h अपॉन x की वैल्यू निकाली होगी, वहां से आपने x निकाला होगा. जहां तक मेरी सोच कहती है आप लोगों ने कुछ ऐसा ही किया होगा. बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. No, sir. Why it is not required? Now listen to me. देखो, h divided by ts is equal to tan 60. अब बेटा tan 60 की वैल्यू जो है वो रूट 3 होती है. अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व. That gives me ps is equal to h upon root 3. Similarly, h divided by qs is equal to tan 30. tan 30 की वैल्यू जो होती है, my dear friend, that is 1 upon. So qs is equal to root 3 multiplied by h. Now according to question, ps plus qs is equal to 84 root 3. Add कर दो दोनों. h upon root 3 plus root 3h is equal to 84 root 3. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे so you will have 4h by root 3. 4h by root 3 is equal to 84 root 3, or what you will have, h is equal to 21 root 3 multiplied by root 3, which is equal to 63. क्या ऐसे किसी ने किया था या आप लोगों के पास कोई दूसरा मेथड? You did like this or you have some other method?
Yes, sir. I did like this. ओके, किसी के पास कोई और मेथड हो तो बता दो भाई, शेयर कर दो। Yes, sir. और अगर, हाँ बताइए Sir, बताइए। first we'll mark the top point of the pole to be A, and Mark we will कर find दिया। the length of AQ. AQ, ओके। Once we get the length of AQ, we can find the length of AS as well. How you will find the length of AS after calculating the length of AQ? Sir, AQ will be the hypotenuse in the triangle ASQ, and we have the value of लेकिन sin 30. SQ So की वैल्यू तो perpendicular. पता नहीं है ना? हाँ ठीक है, ओके फाइन। So first you will but how you will calculate AQ? Sir, we know that angle PAQ will be equal to 90 degrees. And we can then we will take 30 as angle theta, and then we know the length of hypotenuse PQ, that is 84√3. So we can apply trigonometric ratios to find the length of AQ. Okay, you can apply. Okay, fine. ठीक है। See, what your friend is saying that आप जो है पहले AQ का लेंथ फाइंड कर लो, और AQ का लेंथ फाइंड करने के बाद then this is a right angle triangle, then you can calculate the length of AS. Okay, fine, you can do like this also. But what I personally feel that this will be a little bit lengthier. This is what I feel. If you can do it quickly, if you can do it easily, then I don't have any issue with this method of yours. But the point is, if this question is coming in objective, then you should not spend more than 1 minute for solving this question. So this is this I'm giving on your jurisdiction. If you feel that you can solve this question easily in less than 1 minute, then please go by this method. But I personally feel that this can be little bit difficult. This cannot be wrong. But this can be little bit lengthy. We can do it by this method also. First find AQ and then find PQ and AS. AQ निकालो, AQ क्या है, AQ निकालो, PQ निकालो, AS निकालो। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, मेरे को ये नहीं समझ आया। देखो बेटा, आपने जो कैलकुलेट किया, आपने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके आपने सबसे पहले AQ को कर लिया, फिर आपने दोबारा राइट एंगल को यूज करके आपने AS को कर लिया। This is correct. What your friend is also saying in the message, that is also correct. I don't have any issue. But the thing is, you are unnecessarily calculating two things. You are unnecessarily calculating two things or more things, whereas you have to calculate only one. This is the little bit concern that I have. कि जब आपको सिर्फ AS निकालना है तो आप AP, AQ क्यों निकाल दो भाई, मत निकालो ना। जो पूछा है वो निकालो, आंसर लो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो, खत्म कहानी। किसने कहा PhD करने के लिए हाई कंडीशन? ओके, चलो नेक्स्ट। चलो, दिस इज द क्वेश्चन and you have let me read the question, then I will give you time. The question is saying a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. Flag staff मतलब होता है झंडा. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is. This question we have already done. But again we want I will just ask you to solve this question. No problem. कर लो question को. जितने practice करोगे उतना ही अच्छा है. The time you have to solve this question is 2 minutes. So time starts now. कई सारे authors ऐसे होते हैं जब एग्जाम टाइम आता है and when you start panicking, तो कई सारे authors ऐसे होते हैं कि in order to sell their book, they also give you question on vertical. वो जिस बच्चे की मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, वो मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर आया था वर्टिकल प्लेन वाला. मैंने साफ साफ उसे सॉल्व करने से मना कर दिया था. I told him that this question can never be asked to you.
because it has been clearly mentioned that we will be dealing only with the horizontal plane cases, not with the vertical plane cases. पहली चीज तो वर्टिकल प्लेन केस का अगर आपको कहीं पे भी सवाल मिलता है 10th क्लास की लेवल पे 10th क्लास की मत करना, इसलिए नहीं कि नहीं कर पाओगे, इसलिए बिकॉज योर टाइम इज मोर प्रेशियस। अगर आप 2 घंटा लगा के या 1 घंटा लगा के या इवन 10 मिनट लगा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, that will be of no use। और आपकी स्टेज पे आप कुछ भी करो, it should be of use। So the question is, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h। Now here this is very interesting। फ्लैग स्टाफ की हाइट है 10 h, ठीक है, ये एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, इस फ्लैग स्टाफ की हाइट है h। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला जो एंगल है दोस्त, ये वाला एंगल बीटा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, लेट अस अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस टू बी कैपिटल H, ठीक है, वो बाद में अपन वो कर लेंगे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, मुझे इस कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे सर? अगेन द प्रोसेस इज द सेम। यहां से नहीं समझ में आता है, ये तो आपका रफ डायग्राम हो गया, यहां से नहीं समझ में आता है तो एक इस टाइप का डायग्राम और बना लो। ये वाला एंगल जो है बीटा है एंड दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, ये A B C and this is D, this is H, this AB is capital H। now what I will have small h plus capital H divided by BC is equal to tan beta, ठीक है। तो further one more thing I will have, small h upon BC is equal to tan alpha। So from here I can say that BC is equal to h upon tan alpha, ठीक है। BC मिल गया मेरे को h upon tan alpha। Now what I will put the value here and then let us see what I am getting। So I am erasing few things। Sir, we can directly divide both the equations. Yes, you can directly divide both the equations, no problem. You can directly divide both the equations. Yes. So what I will have is small h plus capital H divided by h multiplied by tan alpha, which will be equal to tan beta। So now I will have h tan alpha will be equal to tan beta minus tan alpha multiplied by capital H। So capital H will be h tan alpha divided by tan beta minus tan, h tan alpha divided by tan beta minus tan। This is how you have to solve these questions। These are very easy questions। Some of these questions are very easy questions। So this is how you have to solve this। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Anybody, any doubt? Sir, हाँ बोलिए बेटा। sir, we can also do this by subtracting both the equations। Yes, you can। Yes, you can। But how will you do by subtracting both the equations? So by subtracting both the equations, we will get the value of the base. Base will be equal to the h upon tan beta minus tan alpha, and from there we will substitute h to be, the height the base to be as h upon tan alpha। Done, मान लिया। और बताइए, और किसी का कोई सजेशन?
और किसी का कोई सजेशन कि ऐसे भी कर सकते हैं? सी दिस इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन हाउ यू कैन मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू, because ultimately it is you who has to appear in the examination in the month of November and then in the month of March and then in the month of May or June. It is possibly you, it is probably you. So you have to make the things easier for yourself. My concern is only that you are able to prove this and you are able to write hence proved or not. That is my concern, or any teacher's concern. They are not concerned about how you are solving the things. But हाँ, कोई ऐसी गलती मत करना जो कि expected ना हो. 2 + 2 = 5 मत लिख के आना just to prove that. ऐसा कुछ मत करना. बाकी जो सब ठीक है. Doubt in second step. Which step, Rajneesh? Can you please unmute yourself and tell me which step you have doubt? That where you have written small h plus capital H upon capital H, tan alpha is equal to tan beta. ये वाला बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे BC is equal to H upon tan alpha कर दिया था, और फिर मैंने BC की जगह H upon tan alpha यहाँ पे पुट कर दिया. जब मैं H upon tan alpha पुट करूंगा so H will come here और ये जो tan alpha है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज व्हाट. अब बेटा इतने स्टेप्स तो डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, प्लीज इतनी लिबर्टी है. आप लोग 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में जी इतने स्टेप्स तो डायरेक्टली कर सकते. ठीक है चलो. Okay, I have some more questions for you. Let me see that question. Where is that question? There was a very interesting question. Vertically in the middle of the paddy field. Paddy field वाला question तो अपन ने कर लिया था ना. The angle sun decreases. This also we had done. An aeroplane is flying. This also we had done. This boy also we had done. एक क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन करवाना जरूरी है आपको, क्लाउड वाला. I have that question, but where it is? हाँ ये मिल गया. देखो भाई, this is a very interesting question. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है. The time for this question is 2 minutes. I'm just reading the question. The angle of elevation of the cloud from a point h meters above a lake is alpha, and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. याद करो एक उस दिन जब हम लोग शिप वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की बात नहीं की थी. Here this question becomes interesting because it is talking about the reflection. It is talking about the reflection. So that is why this question is little bit interesting, and that is why there are chances of making mistake. So the time allotted for this question is 2 minutes. So please try this question. I will get back to you in 2 minutes. Now देखो कैसे करना था ये question. The question is saying if the angle of elevation of a cloud from a point h above the lake. एक सबसे पहले मैंने एक लेक बना दिया जो कि मेरा है EF. लेक EF को मैंने लेक से रिप्रेजेंट किया. आपको ये मत बोलना कि सर लेक ऊपर कवर्ड होती है आपकी स्ट्रेट लाइन के साथ. प्लीज एज्यूम इट. फाइन. तो लेक को मैंने EF से रिप्रेजेंट कर दिया. The angle of elevation of a cloud from a point h meters above the lake. So C is that point जहां से हम elevation measure कर रहे हैं. And this is my cloud. I am very poor in drawing, so adjust कर लेंगे. So this angle is alpha. Fine. This angle is alpha. Now what happens? And the angle of depression of its reflection in the lake is beta. अब बेटा जब लेक का रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन तो यहां से होगा ना, लेक के पॉइंट से होगा. तो डीएफ जो है किसकी हाइट है? ये इस क्लाउड की हाइट. तो अपन ने क्या माना था कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां से जो हमारा लेक है, हम वहां से हमारा जो क्लाउड है दैट इज h मीटर्स. पहली चीज. सो दिस AF will be equal to
H plus capital H plus small h. Find AF will be equal to capital H plus small h. I know this Facebook is equal to H, this FB is equal to H, और ये जो DF की वैल्यू है, this is nothing but capital H plus small h. So my BD will be equal to capital H plus small h plus h, which is equal to capital H plus 2h. सारे पैरामीटर्स मिल गए मेरे को. अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं. मैं देखो, एक बार अगर मेरे को कहीं से BC की वैल्यू मिल जाती है, the distance of the cloud from the point, distance of the cloud from the point of observation is this one. ठीक है, तो एक बार मेरे को पहले BC की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद BC की वैल्यू निकालने के बाद we will calculate the other things and then we will solve this question. So first of all, H upon BC will be equal to tan alpha. Okay, H upon BC will be equal to tan alpha. So BC will be equal to capital H upon tan alpha, which is nothing but capital H upon tan alpha. अब tan alpha को अपन क्या लिख, 1 upon tan alpha को what I can write? I can write it as cot alpha, which is equal to H cot alpha. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई, this is my H cot alpha. Now what will happen? I have to calculate this ratio. Now what I will have, H plus 2H divided by H cot alpha is equal to tan beta. I am solving it here. H plus 2H divided by H cot alpha is equal to tan beta. So from here I will eliminate other things and I will get the value of this H. I will get the value of H in terms of 2H. एक बार चेक कर लेते, कोई गलती तो नहीं की है भाई. This is H cot alpha and this will be H plus 2H and the ratio will be equal to tan beta. Fine. So now what I will have, H plus 2H will be equal to tan beta upon tan alpha multiplied by capital H. Now what I will do, I will transfer this H here. So 2H will be equal to tan beta upon tan alpha minus 1 multiplied by H. So this will be finally 2H will be equal to tan beta minus tan alpha upon tan alpha multiplied by H. So my H will be equal to 2H tan alpha upon tan beta minus tan alpha. 2H tan alpha divided by tan beta minus tan alpha. What is the result we are getting? We are getting 2H sec alpha divided by tan beta minus tan alpha. Now is there any mistake that we have done? Is there any mistake we have done? बताओ, क्या हमने कोई गलती की है? Sir, we have to find AC. अच्छा, we have to find AC. पक्का श्योर? पक्का श्योर? Yes, sir. श्योर? सोच लो भाई, गलत मत बताओ. Actually, yes, we have to find AC. One thing that I told you while I was explaining the question, that I can't understand this word distance. I thought that the word distance was wrong, but actually the word distance is correct. We have to find
this AC distance. We have to find this AC distance. So now I am giving you a very important conclusion. Please don't jump and straight away say that the question is wrong. Maybe you are not able to understand the question. From this incident that happened, we concluded that the question is wrong and we calculated H and we got some answer also. But that answer is not the correct answer. We have done everything correct here. But the only thing that is our mistake is we have not read the question. So my dear friends, this should be a lesson for you that please read the questions here. The questions that are framed by the most intelligent persons. Be it in your exam or be it anywhere, be it in any of the reference book that you are reading. They are framed by most of the intelligent persons. So please don't straight away declare the question as wrong. So as your friend said that we have to calculate the length AC. So now what will happen? H upon AC will be equal to sine alpha. What we will have here? H divided by AC, capital H divided by AC will be equal to sine alpha. Capital H की वैल्यू रख दो, capital H की वैल्यू कितनी आई थी? 2h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. 2h tan alpha divided by tan beta minus tan alpha multiplied by this AC will be equal to sin alpha. अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो sin alpha will get cancelled. कैसे सर? ये tan alpha को आप लिख दोगे sin alpha upon cos alpha. So sin alpha will get cancelled. So my AC will finally become 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha. When I started this question, the very first moment I was knowing that this is going to happen. But since I have already told that I suspect that the question is having something wrong. That is why I did all this. Okay. I knew from the very first moment जब वहां पे वर्ड sec alpha आया था तभी मुझे लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है. So finally, this will be the answer of the question that the distance of the cloud from that point of observation will be 2h sec alpha divided by tan beta minus tan alpha. Okay. So by this question, I'm declaring that the chapter is over from our end. Now you guys have to do the question. We have discussed most of the difficult questions. In the next class, what we will do, we will start with a new chapter. We will start